बनाने आए हो? टैटू। हम लोग टैटू बनाने आए हैं। और कितना टैटू का पैसा? 5 रुपए है आपके पास? 5-15 का। हाँ, आप कितने का बनाओगे? आप कितने का टैटू बनाओगे? 15 का। और आप? हाँ, 15 का टैटू बना रहे हो। We celebrate Entrepreneurship Day. Basically, the motto behind this is students getting involving in a small type of an activity wherein their self-confidence increases. What we try to do is they put up a small stalls wherein we teachers, we discuss with them together how they can invest, who are their partners, whom the students they are more comfortable with, what is the best item then they can put up there which will be favorite among the students, among the children, which will be sold out at a faster rate, the amount of money that they are investing, the calculation, who's going to bring what, the distribution of the work, and then on that particular special day performing their best and resulting into profit into their business. This is the basic activity wherein the self-confidence of the children increase. Well, they're small things. Some of them may be bringing food items, eatables, some of them are doing mehndi, tattoo, nail painting, all these small activities they're trying wherein they have got the self-confidence, yes, that they can do something. That is the whole motto behind the small activity that we do every year. Getting tattooed from students. It's a really wonderful experience. First time I'm doing it in my life, and it's we are feeling very great that students are doing this, and it's a wonderful experience. I can see you have also put up a mehndi. Mehndi, yeah. So what do you want to say about the artist student? Yeah, we have so many artist students present here, and we are coming to know about them just now, and it's a great feeling that we have such a wonderful students in our school. Thank you so much. Thank you. आपने? हाँ? कितने का था? 5 का। 5 रुपए का था। My name is Pravas. Okay. And what was the item you sold today? Our item was like a Nepali chowmin, and we sold like a half plate 20 rupees, 10 rupees, and full plate 20 rupees. Okay. So what was the profit? It was maybe 400, but we got 500 rupees. And who are your team members? Me and this Ramesh, and this is Sofyan. We three of we did. So 3. Yes. मैंने तो तुम लोग को कल ही बोला था कि मैं निकाल देती। अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूँ? मैं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रवीना। रवीना। और ये आपका स्टॉल है यहाँ पे, तो आप मेहंदी निकाल रही हो। तो कितना, ये पहला कस्टमर है आपका? नहीं, बहुत लोग आते गए। कितने को निकाला अभी तक? मेरे को 6-7 लोगों को निकाला। और क्या चार्ज किया आपने उनको? हाँ, इतना रहता है तो 5 रुपीज़ और इधर 10 रुपीज़, इधर से लिया तो 20 रुपीज़। ओके। और कितना आपने अब तक कितना कमाया? हम लोगों ने कितना कमाया? मेरे बुक में लिखा है। शायद अभी हाँ 60-70 कमाया। और आपको इससे फ़ायदा हुआ, इससे कुछ एक्सपीरियंस मिला आपको ये करके? स्कूल ने ये आपको प्लॅटफॉर्म दिया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। अशा भुरग्यांकडे पळोवपाचो एक वेगळो दृष्टिकोन आसता लोकांचो। तुम्ही कितें सांगतले? आणि ह्या स्कुलान ह्या भुरग्यांची वागणूक आणि इतर गजाली तुम्ही कशे एक्सप्लेन करतले? साधारण आमच्या स्कुलान एक्चुअली साधारण 150 ते 170 भुरगे आसात.
हे सगळे भुरगे आमकां चडशे मायग्रंट्स पळोवंक गेल्यार 90% भुरगे मायग्रंट्स म्हणटात पळोवंक 90 म्हणजे पेक्षा 100%चेरूच वतात ते भुरगे. पूण एक गोश्ट ह्या भुरग्यां भितर आमकां सामकी अशी दिसता ती म्हणजे तांचे कॉन्फिडन्स म्हणजे हांव आजूच अशें म्हणटालो की आमचे समाजांतल्या भुरग्यांक जर हेंच करूंक लायत न्ही जाल्यार ते विड्रॉ जातले. पूण ह्या भुरग्याक इतके नेटान आनी इतके फास्ट एका दिसाच्या प्रिपेरेशनान पसून ते करूं शकतात. इतके तेंचे भितर पोटेन्शियल आसा आनी तीच आमच्या भुरग्यांनी पळयत जाल्यार ती आमकां कांयच दिसना. आनी हो गूण तेंचो. आनी दुसरें म्हणजे एंटरप्रेन्युअरशीप म्हटल्यार न्ही जे असल्या कामान जर कितें 4 आण्याची वस्त ते 2 रुपया करून हाडूंक मेळ्ळ्यार ते सहज करून हाडटले. पूण आमच्या भुरग्यांक जर 2 रुपया दीत जाल्यार ते 4 आणे करून हाडपाची परिस्थिती ना तेंचे कडेन. आतां दुसरें सांगपाचें म्हणजे तुवें म्हणल्यार आमच्या टिचरांनी हे सगळीं भुरगीं आतां नवीन टिचर आमचे पूण ते इतकें बरें काम केलां की आमकां पसून लजूंक पडटा आमगे एकदां आमचे कडेन जमना म्हणून. पूण तेणें इतकें बरें काम केलां न्ही पळय जाल्यार खरेंच तेंची वाखाणणी करपाक जाय. हाँ, आपका नाम बताओ. मेरा नाम नीतू ओली है और हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक शॉप निकाले है और जिसमें हम लोग 3 आइटम बेच रहे हैं. एक आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कटलेट और फिश कटलेट बेच रहे हैं. और तीनों आइटम्स हम 10-10 रुपीज़ के बेच रहे हैं. और हमारा ग्रुप छोटा सा, हम 3 ग्रुप हैं. एक मेरा नाम नीतू, रहमान और मुबारक. ओके. और कितना ये हुआ आज का प्रॉफिट क्या हुआ? 500 ही हुए. माझं नाव दुर्गा ओली, याचं नाव प्रिया फर्नांडीस. तुम्ही पार्टिसिपेट कित्याक जावना? आम्ही टेंथान म्हणून तुम्ही कितें कितें घेतलें आमच्यान? खूप किरकिरी सगळे शॉपांनी असले तर सगळ्यांच्यानी एक टॅटूही काढला. याफिन और आज आपने क्या सेल किया था? ये फालूदारा ये सुक्का बेल सुक्का बेल. कितना सेल हुआ? गिना ने अभी कितना नहीं. और प्रॉफिट कितना हुआ? कितना पैसा मिला? 300-400 भी. और स्कूल ने ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है ये कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा. बहुत अगले साल भी होना चाहिए. हाँ, ऐसा अगले साल. कौन से टीचर को आप ये थैंक्स बोलोगे? मैडम को थैंक्स. Students, their behavior may be different from us, but as teachers and especially with this program, I think we have collectively put in effort to bring out the talent in them. Because I saw on one of the stalls the children, they put up things like paper quilled earrings. They actually went and learned that, in order to do business kind of thing. And they are more than excited. They are more than ambitious to do things like this, so that they can bring out their talent and show that they can also do something. सुहानी नाईक. सुहानी नाईक. कितें तुवें नायक सेल करपाक दवरला? क्लिप्स, इयरिंग्स, पाणीपुरी जालें. याच्या बद्दल सांग मुगो कितें? क्विलिंग पेपर रोल करून गमान हे केला. बरं तुवें मातशें दाखयता आमकां कितें कितें खंयच्या गजाली. हें कितें? क्विलिंग पेपरूच हां. मीन्स एका रोल केला आणि ते हूक लायला. इयरिंग अशी सगळे हाता येता क्विलिंग पेपराची रोल. आणि कशें विकले तुवें?
10 रुपीज 10 रुपीज इच. आणि फायदा कितलो आलो? फायदो कितले का विकले? कितले विकले? 4 बीन विकले असते. 4. पण तू विकले तितून हॅपी आसा? हय. शोभा सुनार. और क्या आज आपने सेल किया? कस्टर्ड एप्पल हाँ. और आइसक्रीम और मक्खी. और कितना सेल किया आपने? बहुत किया. कितना फायदा हुआ? हुआ होगा 300 तक. 300 का. 300 फायदा. और ये स्कूल ने जो आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा था? बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है. समीर, हेजें नाव माझें नाव रिशाद, हेजें नाव समीर आनी हेजें नाव ओप. तुम्ही आयज कितें केल्लें? हां, कितें केल्लें आयज? कॉर्न चाट कॉर्न चाट. कितले हाडलेले? 2 पॅकेट. आणि कितले सेल जाले? खूप झाले, सगळे झाले. सगळे जाले. कितल्याक विकले तुम्ही? हां, कितल्याक विकले? 10 10 एक कप. कितले आता मेरेन पयशे मेळ्ळे तुमकां? 650. 650. आणि हो जो स्कुलान तुमकां आयज वेगळो एक्सपिरियन्स करून दिला तो तुमकां उपयोगाक थारलो? फुडें कितें चिंततले बिजनेस बी करपाक? आपने क्या आज सेल किया? कस्टर्ड एंड आइसक्रीम एंड मक्खी. और कितना फायदा हुआ आपका? 300. कैसे बेचा? मतलब एक कप कितने रुपए में बेचा? एक कप 10 रुपीज. कितना फायदा हुआ बोला? 300. योर नेम? My name is Ruzwan. My name is Riyaj. Okay, what you sold? We are sold here limbu pani and Sharbat. rasna. और रेट क्या था इसका? Half glass 5 rupees and full glass 10 rupees. And what was your profit? Profit No profit? profit is done, but कितले पैसे झाले? खबर ना मेजूंग ना. अजून ना? ओके. सो खुश आसा तू आयज कितें पयशे मेळ्ळे होय. बिजनेसान तुझ्या? मेरा नाम एलिना. और आपके ग्रुप टीम में कौन कौन है? पायल और अनुषा. ओके. और आपने क्या किया था? आज हमने वेज और नॉन वेज चॉप्स किया था और नींबू सोडा. और कितने में बेचा? 10 रुपया. 10 रुपए में. हाँ. और प्रॉफिट कितना हुआ आपका? प्रॉफिट अभी मालूम नहीं. गिने नहीं. तो कितने इससे कितना हुआ? कितने बेचे आप? सेल सब हुआ, सिर्फ अभी वेज चॉप्स का 3 बचा है. कितने लाए थे? 25. तो ये आज जो स्कूल ने किया इससे आपको कुछ फायदा हुआ? हाँ, कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिला. हाँ. तो ये बिजनेस आप आगे जाके सोचोगे कि ऐसा कुछ करना है आपको? हाँ, सोचूंगी ना. ओके. बरें टीचर, कितें आशिल्लें आयजचो प्रोग्राम हो भुरग्यां खातीर? आयज आमी एंटरप्रेन्योरशिप डे आसलो आमचो. एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप डे इज ऑन द 9th of November, but we are celebrating it today. This was a program for the 8th and the 9th standard kids, wherein we allowed them to put stalls, and they could have put anything on the stall, food items, or some of them did this also. So it is an experience for them to learn in future if they want to get into business. So this is a very good experience for them to know what they have to do, how they have to go about all the things, how they'll get profit, or whether if they've got loss, how they will come over it. So this was an experience for them. How do students give response for this particular program? Are they okay with it, or they do get confused with it? Our students actually are very, I should say, overexcited for such activities. Once they come to know that we are having a program, all of them will come running to us. We don't have to go to them. They will come to us asking what is there, how we have to go about it, and all those things. So this enthusiasm is there in our students. If any activity we keep for them, they will come running to you. शबनम मंडोल. Okay, and how many pani puris you sold so far? 70 to 80. Students liked it? Yeah. What was the profit? How much you earned? 300. 300. Yeah.
प्रोग्राम आसा सगळे भुरग्यांक एक्चुली तितले एक लेवलाच्या भुरग्यांक तसले एक प्रोग्राम बरे हे जाता तांच्या फुडाराक आसूं. आतां चडशे ते मायग्रंट आसता SSC जावन नाजाल्यार मदीं ते सोडून दुसरे वयतात. थोड्यांनी स्कूलूच ड्रॉप करतात. तांकां ते आवय बापायचे ते परिस्थिती प्रमाणे तांकां ते बिजनेसीक घालता. तांकां हे एक बरें इंट्रोड्यूस आसा. मॅडम एक ह्या स्कुलान भुरगे येतात तांचे एक हे आसता की दुसऱ्या भाशेंतल्यान शिकून येता आनी मागीर अचानक इंग्लीश मिडियमांतल्यान ते सुरू जाता. अशा वेळार तुमी कशें ह्या भुरग्यांक हँडल करता आनी कशा पद्दतीन तुमकां फेस करचें पडटा प्रॉब्लम्स अनेक भुरग्यां मेरेन ते शिक्षण पोचोवपाक? हय, एक्चुली हो डिफिकल्ट टास्क जाता पूण टोटली डिफिकल्ट न्हय. कित्याक आमी जी आसा आमकां तरी दोनी भाशा कळटा. भुरग्यांक जरी एक भाशा कळटा आमकां दोनी भाशा कळटा. एज अ टिचर आमकां भुरग्यांक इंग्लीश पावोवपाची आसता पूण खंयच्यान तांच्या मातृभाशेंतल्यान तांच्या तकलेन ती घालची पडटा. सो जर कॉम्बिनेशन करत आनी एक्सपेरिमेंटल जेन्ना तूं करता पळय तेन्ना भाशेचो फरक चड येना. तांकां कॉन्सेप्ट कळ्ळो की मागीर तांकां तें ज्ञान आपुणूच जमता. सो मिक्स जर तुवें तांचे कडेन हें दवरीत संबंद मिक्स भाशेंतल्यान इंग्लीश आनी हिंदी, चड करून हिंदी कॉमन चडशे जाणांक खबर आसता. सो इंग्लीश आनी हिंदी जावं मिक्स कोंकणी अशें करून जेन्ना तूं तांचे कडेन संवाद सादता पळय तेन्ना तें तांचें ज्ञान तांचे पर्यंत पावप सोंपें जाता.